Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the dear viewers. Hope that all will be fine. As you know that we were studying unit number 4, that was the earthquake awareness and preparedness. And now moving towards our today's lecture. Before moving towards our today's lecture, I shall ask few questions from you about the previous topic. So the first question is that how can people reduce earthquakes adverse effect? You know very well that what is the meaning of adverse. यानी कि adverse का मतलब क्या है कि इसके जो बुरे असरात वगैरह हैं, मख्फी असरात हैं, उनको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं. We can't finish them, but we can reduce them. So he is basically asking that how can people reduce earthquakes adverse effect? So its answer will be that people can reduce earthquakes adverse effects by proper planning and preparation. Means to say that if we have a proper planning and if we have a preparation before earthquake occurs, we can reduce its adverse effects. The second question is that what should we do before an earthquake? यानी कि earthquake ज़लज़ला होने से पहले हमें क्या करना चाहिए? What proper planning we should do? What points we have to keep in our mind before an earthquake occurs? So, as you know very well that we have learned that those points in the previous lecture, that what to do before an earthquake. These were almost 7 to 8 points, and now we were summarize them in our own wording. So its answer will be that we should have fire extinguisher. We should have fire extinguisher. We should also have first aid box and flashlight. We should have a plan to meet our family after earthquake. And last but not the least, we can say that we shouldn't leave heavy objects. We shouldn't leave heavy objects on the shelves. So these were basically the few questions and their answers from the previous lecture. And now moving towards our today's lecture, that what the writer is going to say in today's topic. So in today's topic, he is basically saying that what to do during an earthquake. So it means, first of all, he tells us that what we should do before an earthquake, and now he is telling that what to do during an earthquake. Earthquake is occurring, and what points we should keep in our mind. The first point is that if you are outdoors basically means कमरे से बाहर होना, घर से बाहर होना, ठीक है. कमरे से बाहर अगर ना भी करें तो घर से बाहर कर लें. If you are outdoors, अगर आप घर से बाहर हों, stay in the open. तो ओपन तक आप इसका मान अपने माइंड में रखें कि stay in the open यानी कि खुले में रहे. ऐसी जगह जहाँ पर इमारतें वगैरह ना हो, इनसे दूर खुली जगह पर रहें, खुली फिजा में रहें. इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर से बाहर हों, स्टे इन द ओपन, तो खुले में रहें, अवे फ्रॉम पावर लाइंस. पावर बेसिकली पावर लाइन से मुराद बरकी लाइंस, ये जो हमारे पास बिजली के खंभे वगैरह होते हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दीज. सो ही इज सेइंग दैट वी शुड कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दीज पावर लाइंस और एनीथिंग दैट माइट फॉल, या किसी ऐसी चीज़ से भी दूर रहें जो कि गिर सकती हो. सो बेसिकली इन होल पॉइंट बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा, इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर से बाहर हों, स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम पावर लाइंस और एनीथिंग दैट माइट फॉल. तो बरकी लाइन या किसी ऐसी चीज़ से दूर रहें जो गिर सकती हो, ठीक है. तो खुले में रहें और बरकी लाइंस और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो गिर सकती हैं, मुमकिन तौर पर गिर सकती हैं. द सेकेंड पॉइंट इज दैट स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स. You know very well what is the meaning of building. So stay away from buildings. इमारतों से दूर रहें. Stuff might fall. Underline that word stuff. The synonym of the word stuff is material or item. Stuff, material, item. यानी कि सामान या कोई भी माल वगैरह. So stay away from buildings. इमारतों से दूर रहिए. Stuff might fall off the building. इमारतों से सामान गिर सकता है, ठीक है. स्टफ माइट फॉल ऑफ द बिल्डिंग, इमारतों से सामान गिर सकता है. और द बिल्डिंग कुड फॉल ऑन यू, या इमारत भी आप पर गिर सकती है. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड आउटसाइड डोर्स. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड आउटसाइड डोर्स.
खिड़कियों और बैरूनी दरवाजों से दूर रहिए. So basically in that whole point he is saying that we should not keep ourselves nearer to the buildings or outside doors, because these things might fall and can cause injuries to us. In the third point he is basically saying that if you are indoors, अगर आप घर के अंदर हैं, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर इंडोर्स, अगर आप घर के अंदर हैं, स्टैंड इन अ डोरवे. डोरवे बेसिकली मीन्स दरवाजे में खड़ा हो जाना. स्टैंड इन अ डोरवे तो दरवाजे में खड़े हो जाएं. और क्रॉल, अंडरलाइन दैट वर्ड क्रॉल. क्रॉल, क्रॉल बेसिकली मीन्स क्रीप. क्रॉल, क्रीप, रिंगना. क्रॉल, क्रीप, रिंगना. सो इफ़ यू आर इंडोर्स स्टैंड इन अ डोरवे, अगर आप घर से अंदर हैं तो दरवाजे में खड़े रहिए. और क्रॉल अंडर हैवी फर्नीचर, या भारी फर्नीचर के नीचे छुप जाइए या रिंगते हुए चले जाइए. ठीक है, या भारी फर्नीचर के नीचे छुप जाइए या रिंगते हुए चले जाइए. ही इज़ बेसिकली सेइंग दैट बिकॉज if an earthquake occurs and some things fall on heavy furniture, and if you are under the heavy furniture, then there is some sort of a chances that you can be saved. So in the next point he is saying that if you are in bed, अगर आप बिस्तर पर हैं, पलंग पर हैं, hold on and stay there, तो वहीं पर खड़े रहिए, वहीं पर लेटे रहिए और इंतज़ार कीजिए. protecting your head with a pillow, underline that word pillow. The synonym of the word pillow is cushion or headrest. cushion, headrest यानी कि तकिया या सरहाना वगैरह. So he is saying that if you are in bed, hold on and stay there. अगर आप बिस्तर में हैं, अगर आप अपने पलंग पर हैं, तो वहीं पर रुके रहिए और इंतज़ार कीजिए. protecting your head with a pillow, और अपने सर को तकिए से बचा लीजिए, महफूज कर लीजिए, ढांप लीजिए. You can use ढांप word more suitable. ठीक है, protect your head with a pillow, तो अपने सर को तकिए से ढांप लीजिए. Next point he is saying that stay away from bookcases or furniture. Underline that word bookcases. Bookcases. The synonym of the word bookcases is shelves used to store books, यानी कि किताबों की अलमारी. Shelves used to store books is known as bookcase. So stay away from bookcases. किताबों की अलमारी से दूर रहिए. और फर्नीचर या फर्नीचर से दैट कैन फॉल ऑन यू, जो कि आप पर गिर सकता है. किताबों की अलमारी या फर्नीचर से दूर रहिए जो कि आप पर गिर सकता है. सो बेसिकली दीज वर द फ्यू पॉइंट्स which we have to follow during an earthquake, that what we should do during an earthquake. In the last I will summarize it. And now moving towards the next page. Now the main heading is that what to do after an earthquake. So it means that an earthquake occurred and now it's finished, what we shall do now. So what to do after an earthquake, कि ज़लज़ले के बाद क्या किया जाए. Check yourself and others for injuries. अपने आप को और दूसरों के ज़ख्मों को देखा जाए, उनकी पड़ताल की जाए, यानी कि आया कोई ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं हुआ. Provide first aid to anyone who needs it. Underline the word provide. The synonym of the word provide is supply or give, यानी कि मुहैया करना. Provide, supply or give, मुहैया करना. So provide first aid to anyone who needs it. इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की जाए अगर किसी को उसकी ज़रूरत हो. So first of all you will have to check yourself and your close relatives and and the persons who are nearer to you. If anyone is helping some sort of help, you should provide them first aid box or help them. And the next point he is saying that check water, gas and electric lines for damage. बोल रहा है कि पानी, गैस और इलेक्ट्रिक लाइंस का नुकसान चेक कीजिए. ठीक है, फॉर डैमेज उनको चेक कीजिए कि आया उनको कुछ ज़्यादा नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचा. यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई पाइप लाइन वगैरह खुल गई या ज़लज़ले के दौरान कोई भी बिजली या बरकी आलात वगैरह होते हैं वो ऑन रह गए और जिस वक्त ज़लज़ला हुआ वो तारें वगैरह गिर गई, पानी में गिर गई या वैसे किसी बंदे पर गिर गई, तो दीज थिंग्स कैन कॉज डैमेज. सो बेसिकली ही इज़ सेइंग दैट इफ़ एनी ऑफ दीज आर डैमेज्ड, अगर उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा हो, shut off the valves, switches and faucet. You will have to pronounce that word as faucet, as you know that I have written them in Urdu, faucets. So shut off the valves, switches and faucets. Underline that word faucet. You will have to pronounce it as faucet. And the synonym of the word faucet is
स्पिगट, फॉसेट, स्पिगट यानी कि टूंटी, ठीक है। सो वो कह रहा है कि वाल्व्स को, स्विचों को और टूंटियों वगैरह को क्या कर दें, बंद कर दिया जाए। इफ़ एनी ऑफ दीज थिंग्स इज डैमेज्ड यू शुड शट ऑफ देम। इन द नेक्स्ट पॉइंट ही इज सेइंग दैट स्टे आउट ऑफ डैमेज्ड बिल्डिंग्स। डैमेज से मुराद आपको पता है कि नुकसान ज़्यादा, ठीक है। सो स्टे अवे ऑफ द डैमेज्ड बिल्डिंग्स, नुकसान ज़्यादा इमारात से, खस्ता हाल इमारात से दूर रहिए। स्टे अवे, दूर रहना। In the next point he is saying that be careful around broken glass. Be careful, एहतियात कीजिए, around broken glass, टूटे हुए शीशों से, and debris. You will have to pronounce the word as debris, not debris, debris. I have written it in Urdu, you can see. So you will have to pronounce it as debris. The synonym of the word debris is rubbish. Debris, rubbish यानी कि मलबा. Debris, rubbish. So बी केयरफुल अराउंड ब्रोकन ग्लास एंड डिब्री, टूटे हुए शीशों और मलबे से मुहतात रहिए, ठीक है। टूटे हुए शीशों और मलबों से या मलबे से मुहतात रहिए। वेयर बूट्स आर स्टडी, दैट वर्ड इज स्टडी, अंडरलाइन इट, स्टडी। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टडी इज स्ट्रॉन्ग और फर्म यानी कि मजबूत। स्टडी, स्ट्रॉन्ग, फर्म यानी कि मजबूत। सो वियर बूट्स आर स्टर्डी शूज, तो जूतों या मजबूत जूतों का या चप्पलों का इस्तेमाल कीजिए या उन्हें पहने। जूते या बूट्स से बेसिकली मुराद हमारे पास वही शूज है, ठीक है। सो मजबूत जूतों को पहनिए टू अवॉइड इंजरीज टू योर फीट, अपने पाँव को मुख्तलिफ किस्म की इंजरी से मुराद हमारे पास क्या हो सकता है, ये कट्स वगैरह लग जाना या इनमें से कोई शीशा वगैरह लग जाना। तो ऐसे ज़ख्मों से अपने आप को महफूज रखने के लिए मजबूत जूतों का इस्तेमाल कीजिए या मजबूत जूतों को पहनिए। इन द लास्ट ही इज सेइंग दैट एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स। एक्सपेक्ट मीन्स मुतवक्के, ठीक है। सो एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स। After shocks are basically, you can say that when an earthquake occurs and after it few little bit earthquakes came time by time, after few minutes, after few hours, after few days. So these are basically known as aftershocks. So he is saying that expect aftershocks, यानी कि ज़लज़ले के जो झटके होते हैं ज़लज़ले के बाद उनको आप मुतवक्के रखिए, यानी कि अपने माइंड में रखिए कि उसके बाद हल्के हल्के ज़लज़ले के झटके वगैरह होते रहेंगे। So in these whole points he was telling us that what to do after an earthquake, that what points we should follow, we should keep in mind after an earthquake. First of all he says that we will have to check ourselves, the person who are nearer to us. If they are injured, we should provide them the first aid box. Then he is saying that we should check the water, gas and electricity valves, electricity lines for damage. If any of them are damaged, we should close them, we should shut off them. Next he was saying that we should put ourselves away, we should keep ourselves away from these damaged buildings because they might fall and cause injuries and can cause injuries. In the last he was saying that we should also protect ourselves from the broken glass and debris because they can also damage us, they can damage our feet. So we should wear sturdy or strong shoes or boots. So moving towards the main points of today's topic, I have written them in my own wording. So during an earthquake, the first heading is during an earthquake, when an earthquake is occurring. So what points we should keep in our mind? The first one is that stay away from power lines. The first point is stay away from power lines. The second point is stay away from buildings. The third point is stay away from bookcases and heavy furniture. And the fourth point is that protect your head with a pillow if you are in a bed. So basically I am not translating it into Urdu because I have already translated it during a lecture. So hopefully these things might kept in your mind that what points we should follow during an earthquake. Now after an earthquake, when the earthquake occurred, now what main points we should kept in our mind? After an earthquake, provide first aid box to the anyone who needs it. The second point is that shut off the switches and the faucet. The third point is that stay away from damaged buildings. And the fourth point is that be careful from the broken glass. And the fifth point is, last but not the least point is expect
aftershocks. Means to say that after an earthquake, aftershocks are always expected. So these were the few main points of today's topic. Now again moving towards the words synonyms. Words, their English meanings and Urdu meanings, I am pronouncing them again for you. So listen carefully and pronounce with me. The first word is stuff, material or item. Crow, creep. Pillow, cushion or headrest. Bookcase, shelves used to store books. Provide, supply or give. Faucet, spigot. Debris, rubbish. And sturdy, strong or firm. Urdu meaning is written in front of you. You can see, you can also pronounce it. So your homework is to write these words synonyms. These are just almost, I think so, 8 to 10 word synonyms. Your homework is to write these words synonyms neat and clean on your rough copy. You can pause that video and write it. I am focusing again on these words synonyms and Urdu meanings. So your homework is to write these word synonyms on your rough copy. If you have any sort of a confusion, any sort of a difficulty in today's topic, in the previous topic, in this chapter, you can ask from me below there in comments. And one more thing, those students who have not submitted their April May homework of not just English, of every subject, they will have to submit their homework before 25th of June. 24th June is the last date for submitting homework. So those students who have not submitted their homework, kindly submit your homework before 25th June. Thanks and have a nice day.